સુરતમાં ભારે વરસાદ અને ખાડીપુરને કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ બાદ અનેક પરિવારોને ઘર વખરીમાં મોટું નુકસાન થયું હતું। સરકાર દ્વારા અસરગ્રસ્તોને કેશ ડોલની સહાય આપવામાં આવી રહી છે, પરંતુ ડિંડોલી અને ગોળાદરા વિસ્તારની આશરે 15 જેટલી સોસાયટીના રહીશો હજી પણ આ સહાયથી વંચિત હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે। સુરતના ડિંડોલી અને ગોળાદરા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી અને ખાડીપુરના કારણે અનેક સોસાયટીઓમાં પાણી ઘૂસી ગયું હતું। ત્રણ દિવસ સુધી ઘરમાં પાણી ભરાયેલા રહેતા લોકોની ઘર વખરીને મોટું નુકસાન થયું હતું। સરકાર દ્વારા પૂર અને વરસાદથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને કેશ ડોલની સહાય ચૂકવવામાં આવી રહી છે, પરંતુ ડિંડોલી અને ગોળાદરા વિસ્તારની અનેક સોસાયટીઓના રહીશો હજી પણ આ સહાયથી વંચિત હોવાનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે। રણછોડનગર, વૃંદાવન, દેવી દર્શન, સાંઈધામ, પ્રિયંકા 1, પ્રિયંકા 2 સહિત આશરે 15 જેટલી સોસાયટીઓના રહીશો સહાયની માંગ સાથે કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા। 50 થી વધુ મહિલાઓએ અધિકારીઓ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી। મહિલાઓનો આક્ષેપ છે કે કલેક્ટર વિભાગથી લઈને સ્થાનિક મનપા તંત્ર સુધી અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં તેમને માત્ર આશ્વાસન જ મળ્યું છે। સહાય માટે અધિકારીઓની કચેરીના ધક્કા ખાવા પડી રહ્યા હોવાનો પણ મહિલાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો। અંતે યોગ્ય જવાબ ન મળતા મહિલાઓએ કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધરણા પર બેસી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। મહિલાઓનો સવાલ છે કે શહેરમાં અન્ય અસરગ્રસ્તોને સરકારની કેશ ડોલ સહાય મળી રહી છે, તો અમને શા માટે સહાય આપવામાં આવતી નથી? અમારી રજૂઆત સાંભળવામાં કેમ આવતી નથી? मेरा नाम खटीक शिवानी है। मैं वृंदावन सोसाइटी से, वृंदावन पार्क से आई हूँ, गोड़ादरा से। यहाँ पे कलेक्टर साहब के वहाँ उन्होंने, जब हम वहाँ पे गए थे, बाढ़ की समस्या लेकर आई हूँ, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ये विभाग में जाना। जब हम कलेक्टर साहब के पास गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला विक्रम पटानी सर है, वहाँ पे मिलना। वहाँ पे गए थे, जब कलेक्टर साहब के पास ही वो लोग बैठे थे, तो उन्होंने बोला उनके जो काम करते हैं वो बोले कि उनके पास ही बैठे हैं, तो वो लोग हमको पागल बना रहे हैं। तो हमने बोला कि हम पागल है? हमारी औरतें वहाँ पे जाके आई, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठो आप लोग। और फ़ोन पे ऐसे ही उन्होंने बात करके क्या बोल दिया कि उनको बोलो 1 हफ्ते बाद। हम क्या पागल है, इधर से उधर दौड़ेंगे? हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, हम भी काम करते हैं, सब लोग काम वाम छोड़ के सभी लोग आए। सबके घर में समस्या हो, किसी को एक दिन में 10,000 का नुकसान हो, किसी की दुकान बिक गई, किसी का कुछ हुआ है, किसी का फ़ोन को नुकसान हो गया, किसी के कितने सारा नुकसान हुआ हम बता नहीं सकते। और घुटने तक पानी आ गया, जाए तो कहाँ जाए, किसके घर पे जाए? इतना सारा पानी के बाहर भी नहीं निकल सकते हम लोग। तो वही समस्या लेकर हम लोग आए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है खाली हमको पैसे मिल जाए तो, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी में मिल गए, हम ही लोग क्यों बाकी रहे? हमारे ना कोई कार्यवाही की, ना कोई आया घर पे। जी, आपका नाम? मेरा नाम कौशल्या कुमारी है। मेरा 287 मकान नंबर गड़ोदरा पार्क में है। पूरा बारिश में बाढ़ आया था, पूरा भर गया था 3 फीट। पूरा दुकान है मेरा, घर में पूरा दुकान का सामान खराब हो गया था, नीचे आटा दाल सब। और कोई सहायता राशि हमारे में अभी तक नहीं पहुंचा है, और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए। इधर हम लोग वही सहायता राशि मांगने के लिए इधर आए, तो इधर से इधर दौड़ा रहे हैं। कुछ सहाय मिली है? कोई सर्वे करने आए थे? कोई सर्वे करने नहीं मिले, कोई सहाय नहीं मिली। कैसे दिक्कत है? दिक्कतें बाढ़ में हमारा कितना सामान खराब हो गया, दुकान का कपड़े से पूरा खराब हो गए, सब सड़ गए। कितना नुकसान हुआ? नुकसान दुकान का राशन पूरा खराब हो गया था, आटा गीला हो गया था, चावल गीला हो गया था। रिपोर्टर सुजल राठौड़, जनादेश न्यूज़, सूरत।